inculcates the right behavior, and I'm delighted that our young guides would be carrying the message of hand wash, not only inculcating it themselves, but very importantly, spreading it across the country. So absolutely delighted with this initiative, and I want to thank you for being our partners. So thank you once again, and it's been a pleasure to be here with you this afternoon. Thank you, Sanjeev. It is absolutely wonderful to see how that passion and commitment, you can see it running through the Hindustan Lever family. And we really hope that you join us in helping us make an absolute impact throughout this country. And now, ladies and gentlemen, I'd like to request Mr. Samir Singh to give us a very better understanding of what Help a Child Reach 5 has been doing, why we are here, and how we can make this campaign even more successful. Over to you, sir. Thank you, thanks a lot. So look, why are we here? Because it's a fact that even today, 1.4 million children die every year. They don't reach the age of 5 because of preventable diseases like diarrhea and pneumonia. And that's a fact that doesn't just make me sad, it makes me angry because you need to do something about it. And do you know that the simple act of washing hands with soap can prevent a lot of these deaths? And that's the reason Lifebuoy runs one of the biggest behavior change programs in the world. It's Hand Wash Behavior Change Program that was written into our brand by our founder, William Lever, in 1893. And I'd like to show you a film which you would have seen before probably, but see this film to get an idea of the impact that we can have. Can we play the film, please? So thank you a lot, Sanjeev and Kajol, for doing this for us. Thank you. Thank you so much, Samir. Please let's give Samir a round of applause, because really, not only is this a wonderful initiative that has been launched, but I have to tell you, it's a crime to show women 2 tearjerker films at 1 o'clock in the afternoon. Or men. But I could see a lot of the women just doing a slight like, oh God, my makeup kind of moment over there. But you know, ladies and gentlemen, this is not just about the right initiative or having the right person aligned with you. It's also about having the right team and the right kind of people to connect with, to make sure that this becomes a larger than life initiative. And that's why we'd like to introduce to you Meghna Belawadi. She is from WAGS, and she will give you a lot more details about the organization as well as the vision of this partnership. Over to you. Thank you. So my experience with World Association of Girl Guides and Girl Scouts dates back to 17 years ago when I joined the movement. Since then, the journey has been so much important, so transformational. I can see the change in me, and that is the impact it creates. When Sanjeev said, be prepared, we always say, once a scout or a guide is always a scout or a guide, and that is the impact. It has made me realize over time that every girl has the potential, unlimited potential, to learn, to lead, to make a change, and to inspire. WAGS, but across the world and here in India, there are so many challenges and barriers we face that holds them back. WAGS exists to help, support, and guide every girl to realize that potential. And this partnership with Lifebuoy's Help a Child Reach 5 campaign is helping us achieve this across. Together we are empowering Girl Guides and Girl Scouts to save the world through hand washing with soap. Yes, together we can definitely save the world. Our partnership is enabling young people in India to make the difference in their families and also in the wider communities, helping to ensure that children do not stay back home due to illness and miss school, to ensure that every single person can unleash the real potential within themselves. WAGS is the largest voluntary organization for young women and girls across the globe, with 150 member organizations, that is 150 countries, with over 10 million Girl Guides and Girl Scouts across. We are doing what we do because of 1.5 million
volunteers dedicated to inspire. Last year, we joined the partnership with Lifebuoy. Together, we've developed a version of Lifebuoy's already successful School of Five program just for Scouts and Guides, where we are working to deliver the program with Bharat Scouts and Guides. Bharat Scouts and Guides is one of the biggest member organizations, which also shows the diversity. We are extremely proud to partner with Lifebuoy, which is helping the young people take this up, take this initiative, take action, and promote washing their hands with soap, both in their house and also in the community outside. Our current pilot project aims to reach about 4 million people by the end of 2018. Our longer-term vision is also to take this learning and reach the 149 other countries and take this very important message of hand washing with soap. We've developed, to talk about what we've done, we've developed a curriculum in partnership with Lifebuoy. Developed a curriculum for the School of Five program, which helps people to understand the benefits of hand washing better. We've always been taking innovative measures in reaching Girl Guides to learn better, to learn and grow in innovative ways. And this is the epitome of innovation, where the School of Five activities come through a fun comic book where we have superheroes coming and telling the 5 important occasions where they have to wash hands. The leader of Life-Saving Gang is Sparkle, very fondly known as Tara Didi, and she says the 5 important occasions when the hand washing has to be done. And in this case, every guide, every scout, every child feels like a superhero because they believe and they can change lives and they can Hear what you have to say about this initiative. Thank you so much, Tricia. Thank you, Sanjeev. Thank you, Samir, for that, absolutely wonderful, very, very sweetly warm words that they've spoken about me. But honestly, it's my pleasure. And it's really my honor to be here and to stand up for something like Help a Child Reach 5. First and foremost, because I think that Help a Child Reach 5 should not exist. I don't believe that something like this needs to be here, for the simple reason that I think all our children should be able to survive past the age of 5 and have a happy and fruitful life, regardless, not get stopped midway because of something small like diarrhea or pneumonia. And that's really why I signed on. I truly think that we can make a difference. I truly think that we can stop it, we can change it. It's not itna bada pahad nahi hai, ya it is not an insurmountable problem that we cannot face and cannot make a difference to. There are some problems like that in this world and across, where we talk about. We have NGOs for them, we have people standing up for them, and we have natural disasters. So we have lots of things that we cannot fight against. This, I believe we can. I believe that we can make a difference. I believe that we can change things around. India has one of the highest rates of child mortality, and that's something that I think we need to address. The first time when we started, when I first got on to Help a Child Reach 5, our biggest problem was how to make people take it seriously. Really, हम क्या कह सकते हैं कि आप हमको that you can, you listen to us, because there was so much of other spiel going around about so many other problems. And the country is facing it, the world is facing it. It's not like we're not, and it's not like they are trivial, but we sounded trivial in comparison to that. And that was really our first hurdle. So when we started talking about hand washing, that it was the most cost effective and the most simplest habit change that we could inculcate into any hygiene program that we wanted to put into place. I think that was a message that took very long for people to take seriously. अब तक लगता है कि जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग सोच रहे होंगे कि क्यों बात कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात के बारे में, लेकिन जो पहले हमारे माँ बाप हमको सिखाते थे कि नहीं बेटा हाथ मुंह धो के आना टेबल पे, या बेटा
बाथरूम जाने के बाद हाथ धोए कि नहीं आपने? तो ये एक छोटी आदत थी जो हमारे माँ बाप हमको बचपन से सिखाते आ रहे हैं, लेकिन हम बड़े होकर शायद इसके बारे में भूल गए हैं या सोचते हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज जिस तरह से दुनिया बदल गई है, द काइंड ऑफ चेंज दैट हैज कम अबाउट इन द एनवायरनमेंट एंड द वर्ल्ड टुडे, ये एक जो आदत पहले थी जो हमारे दादा परदादा हमको बोलते थे कि बहुत जरूरी है, आज के जमाने में एक जरूरत हो गई है। इट इज अ नेसेसिटी टुडे। When you have diseases like you have diseases which don't even have names anymore, they're only numbers. So you have 3 different versions of the disease and you've named them 1, 2 and 3. How do you combat that? Can you always vaccinate against it? Can you always just try to prevent it in this way? If you really want to prevent it, the first step to prevention is to wash your hands with soap and water. And that is the first thing where when you see doctors around the world, डॉक्टर क्या करते हैं? हॉस्पिटल में अंदर जाते ही हाथ धोएंगे और बाहर निकलते ही हाथ धोएंगे। तो that in itself should show you exactly how much, what kind of a world we live in, and they are doctors, they know better. So that really is where we started out from Help a Child Reach 5, and I'm very, very happy to know that we have associated with WAGS this year, because जो बच्चे कहते हैं पता नहीं क्यों दिमाग में रह जाता है, हम शायद ज्यादा सुनते हैं उनको और शायद हम उनको वो जो कहते हैं हमारे जहन में रह जाता है। So I'm very, very happy that we have over 1 lakh children today in this year who will be spreading the message of hand wash, and thank you WAGS for that. Help a Child Reach 5 started off with the Gundappa film. I'm sure you all have seen that. We believe that, at least we believe that God will help us. So why don't we ever believe that we can help ourselves? I think that's what Help a Child Reach 5 is about. We all need to stand up and help ourselves and help people around us to understand that washing your hands with soap and water can and will save lives and change things around for you. Thank you. Thank you, Kajol. That really was very inspiring. जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि भगवान के हाथ में सब कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में है। Well, ladies and gentlemen, we'd now like to introduce to you a very, very special initiative and welcome onto this stage. She is the guide and patrol leader with WAGS, and more importantly, a fan of Kajol as well. They are absolutely delighted to meet her this afternoon. But first, to help you understand such an important cause, let's request Aishwarya Kiran Gengeje to come and join us. Let's give Aishwarya a round of applause, everyone. नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या किरण गेंगजे है और मैं गाइड में पिछले 16 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इसकी प्रेरणा मेरी माँ से मिली है जो कि खुद एक गाइडर है पिछले 20 साल से। मैं आपको कुछ स्काउटिंग गाइडिंग के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ। स्काउट गाइड के सर बेडन पॉवेल ने 1905 में स्काउटिंग और गाइडिंग की शुरुआत की थी। उनके मार्गदर्शन से हमने बेटी बचाओ, पानी बचाओ और व्यसन मुक्ति जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है। और अभी हमने लाइफ बॉय 5 की पाठशाला से मैंने सीखा कि एक छोटी सी आदत हाथ धोने की बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जो बच्चे पहले साफ सफाई के बारे में नहीं सोचते थे, वो आज खुद घर घर जाकर हाथ साबुन से धोने का संदेश सब तक पहुंचा रहे हैं। मुझे और मेरे बाकी गाइड फ्रेंड्स को 5 की पाठशाला का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में कहानियाँ थी, गाने थे और कुछ गेम्स भी थे। इससे बच्चे खुश होकर सुनते थे और साबुन से हाथ धोने का प्रैक्टिस करते थे और उस प्रैक्टिस के लिए इंटरेस्टेड भी थे, क्योंकि इसकी खास एक वजह थी, इसमें कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे कि धूम, डिशुम, धमाका, तारा दीदी और भालू। इनकी कहानी सुनकर वो खूब मजा लेकर वो हाथ धोते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की गली मोहल्लों में साफ सफाई नहीं होती और इसी के कारण बीमारियां फैलती है, पर बीमारियों को और बड़ा करती है हमारी नादानी। इसलिए ठीक यहाँ पर पहुँचने के लिए स्काउटिंग और गाइडिंग के बच्चे हम काम आते हैं। थैंक यू। Thank you, Aishwarya.
And as Aishwarya just said, that making education not only fun, but also bringing in a cultural relevance to it, that's why we have a little performance. स्काउट्स में थी या बचपन की कोई याद जब आपने कुछ? मैं बिल्कुल स्काउट नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं आई डोंट नो वेदर आई वाज सच अ गुड चाइल्ड। मैं इतनी मतलब ईमानदार, थोड़ा सा गड़बड़ थी उस डिपार्टमेंट में। लेकिन मैंने बचपन में बहुत सारा मतलब मेरी माँ को लोनावला लेके जाती थी, तो जैसे ये बच्चों को भी बाहर घुमाया जाता है या जो भी है, तो हम भी जाके पूरे लोनावला में घूमते थे। हमारे भी गर्ल की गैंग होती थी, लड़कियों की गैंग थी, लेकिन वी वर नॉट गर्ल स्काउट्स, नो। हाय काजल।
मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने बच्चों को ये आदतें कैसे बचपन से सिखाती आई हैं? थोड़ा धमका के, थोड़ा प्यार से, लेकिन आई थिंक सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को, हमारे बच्चों को अब कुछ भी सिखाना हो तो उनको बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है एक सवाल तो हर बच्चा पूछता है, मम्मा व्हाई, वो मतलब सबसे कॉमन सवाल है। तो आई थिंक अगर हम अपने बच्चों को जितनी ज्यादा नॉलेज दे सकें इस एक बात के बारे में, जितना उनको समझा सके कि ये क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, ताकि वो ज्यादा खेल सकें, ताकि वो उनको ज्यादा वक्त मिले सब चीजें करने का जो उनको पसंद है, सब खाने का जो उनको पसंद है। अगर आपको आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है या जो भी खाना है, आप ये सब नहीं खा सकते अगर आपको जुकाम है या आपका पेट खराब है। तो आई थिंक वो सब चीजें अगर हम उनको समझाएं और बार बार समझाएं तो कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में रह जाएगी और होपफुली ये आदत रह जाएगी और ये आदत बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को समझा पाएंगे। Do we have another question? Yes, sir. काजल जी नमस्कार, सुनील दैनिक भास्कर से। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को समझाते रहते हैं और कभी ऐसे चांसेस आते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं और बच्चे हमें पकड़ लेते हैं वो, तो वो कई ऐसा मौका आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल होता है। फिर मैं सॉरी बोल के सेम मतलब आई एम वेरी वेरी सॉरी करके जो भी मैंने गलती की है मान लेती हूँ कि अपनी गलती है और अपनी गलती सुधार देती हूँ होपफुली। और अजय जी किस तरह से मतलब गलती करते नहीं है, परफेक्ट है। वो साफ सफाई और सादगी पर किस तरह से काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ज्यादा अपनी साफ सफाई मतलब ओसीडी है उनको, तो हाथ कॉन्स्टेंटली धोते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ही इज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। अच्छा, उनके बारे में सुना है कि वो अच्छे कुक भी हैं, अच्छा पकाते हैं खाना, कुकिंग भी कर जानते हैं वो। तो कभी आपने किचन में जाके देखा कि वो जब काम करते हैं तो किस तरह से साफ सफाई से? क्वेश्चन कि कुक से बनाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने खाना बना लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सचमुच बहुत अच्छी तरह से खाना पकाते हैं और हाँ, हाथ धो के ही बनाते हैं। Yeah. All right, so we'll give somebody else a chance as well. Yeah. हेलो काजल, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनसे कुछ सीखने लगते हैं, तो आप अपने बच्चों से क्या सीख रही हैं अभी? मैं अभी नहीं, मैं मतलब जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते आ रही हूँ। काफी कुछ सीखा है मैंने मुझे लगता है कि मेरे सबसे बड़े जो गुरु हैं वो मेरे बच्चे हैं। जरूर मैं रोज कुछ ना कुछ उनसे नया कुछ सीखती हूँ। कभी कभी कोई वर्ड्स होते हैं जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, तो नहीं, मुझे बहुत आराम से पेशेंस के साथ समझाते हैं कि मम्मा इट्स एक्चुअली दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। कभी उनकी आदतें होती हैं और मैं कभी उनका नजरिया होता है। तो आई थिंक मैं अपने बच्चों से काफी कुछ सीख गई हूँ, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये सीखी है, आई हैव लर्न्ड पेशेंस। थैंक यू। All right, thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for taking the time out and joining us today. And of course, thank you all for being over here with us. Thank you. What we will do is that, do we still need any more pictures? One of everyone together? One of all of them? Solo. All right, they just need one more. Solo. No, they want all four. He genuinely does.